Hello students, good morning all of you. Until the last period, we have solved exercise 7.5 up to question number 6. Today, we are starting exercise 7.5 from question number 7. Students, question number 7. If y is equal to sine inverse x, then prove that 1 minus x square into d2y upon dx square minus x dy upon dx is equal to 0. Students, y is equal to sine inverse x already given. So y is equal to sine inverse x of differentiate with respect to x. So first of all, find value dy upon dx. But we find d2y upon dx square. It means dy upon dx again differentiate with respect to x. So last finally value d2y upon dx square. It's okay. So first of all write y is equal to sine inverse x. Make an equation first. It's okay. Solution. Differentiate with respect to x on both sides. On both sides of an equation first. Of an equation first. You know y of differentiate with respect to x is dy upon dx. Dy upon dx is equal to sine inverse x of differentiate with respect to x 1 upon under root 1 minus x square. It's okay? You are understanding? Students, cross multiple. Under root 1 minus x square multiply by dy upon dx by cross multiple. Now under root 1 minus x square dot dy upon dx is equal to 1. But we prove that 1 minus x square d2y upon dx square, d2y upon dx square, this value dy upon dx. So again differentiate with respect to x. Again differentiate with respect to x on both sides. It's okay. You know two value are in multiplying. So this value of differentiate by multiplying method. Yes or no? Then under root 1 minus x square is first and dy upon dx is second. Let it's okay. So you know under root 1 minus x square as it is, first variable as it is, dy dx of second, so d2y upon dx square. Students, first as it is, dy dx of dy upon dx is equal to d2y upon dx square plus second as it is into dy dx of under root 1 minus x square. Dy dx of under root 1 minus x square, you know root x of differentiate. Root x of differentiate 1 upon 2 root x. And again differentiate x is 1. It's okay. So under root 1 minus x square of differentiate 1 time 1 upon 2 under root 1 minus x square. It's okay. Into differentiate of 1 minus x square. So 1 of differentiate 0 minus x square of differentiate minus 2x. It's okay. Students, next step under root 1 minus x square d2y upon dx square plus students, you know dy upon dx into 1 upon 2 under root 1 minus x square in bracket minus 2x
It's okay. 2 to cancel. 2 to cancel. Next step, under root 1 minus x square d2y upon dx square. Students, plus into minus, plus minus minus, and x dy upon dx, x upon under root 1 minus y square dot dy upon dx. It's okay. And is equal to 1 of differentiate 0 is equal to 0 is equal to 0. It's okay. Students, is equal to 1 is constant, differentiate of constant value is equal to 0. It's okay. Students, you know this value of LCM, this part of LCM, under root 1 minus x square. So under root 1 minus x square multiply by under root 1 minus x square d2y upon dx square, and is equal to multiply by 0. Next step, under root 1 minus x square into under root 1 minus x square. This LCM multiply by this value. Okay. This LCM cancel, minus x d2y upon dx स्क्वायर. स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है वो इससे मल्टीप्लाई होगी, तो क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट d2y upon dx स्क्वायर, माइनस ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो रिमाइंडर क्या रहेगा, x dy upon dx, x dy upon dx इज इक्वल टू, अब देखिए ये जो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, 0 आएगा. इट्स ओके. You know, under root 1 minus x square multiply by under root 1 minus x square. It means 1 minus x square, root cancel. d2y upon dx square minus x dy upon dx is equal to 0. Hence proved. It's okay. You are understanding? Students, y is equal to sin inverse x of differentiate with respect to x 2 times. First time find value dy upon dx, again differentiate, value find 1 minus x square d2y upon dx square minus x dy upon dx is equal to 0. You know value 1 is constant value of differentiate 0. It's okay. Please write. Next question number 8. Last question of exercise 7.5. Question number 8, students. Given y is equal to sin inverse x of whole square. Question number 8. Y is equal to sin inverse x of whole square, then prove that then prove that 1 minus x square d2y upon dx square, 1 minus x square dot d2y upon dx square minus x dy upon dx minus 2 is equal to 0. It's okay. Students, आपको जो फंक्शन गिवन है y is equal to sin inverse x of whole square, आपको जो फंक्शन गिवन है y is equal to sin inverse x of whole square, then prove that 1 minus x square dot d2y upon dx square minus x dy upon dx minus 2 is equal to 0. It's okay. Students, you know
First of all, given y is equal to sin inverse x of whole square, make an equation first. It's okay. Then prove that 1 minus x square d2y upon dx square minus x dy upon dx minus 2 is equal to 0. Students, y is equal to sin inverse x of whole square of differentiate with respect to x two times. First time we find dy upon dx, and again second derivative d2y upon dx square. Hence proof. It's okay. Differentiate solution with respect to x on both sides. On both sides of an equation first. It's okay. You know y of differentiate dy upon dx is equal to, students, sin inverse x of whole square comparing to x to the power n, x power n of differentiate n x n minus 1 with respect to x. So sin inverse x of whole square differentiate with respect to x, it means 2 in multiply sin inverse x as it is, again differentiate of sin inverse x. It's okay. 2 in multiply sin inverse x as it is, power of 1, and again differentiate of sin inverse x. dy upon dx is equal to 2 sin inverse x. Sin inverse x of differentiate with respect to x is equal to 1 upon under root 1 minus x square. It's okay. Students, जो डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो मल्टीप्लाई होगा डी वाई अपॉन डी एक्स से. इट्स ओके. नेक्स्ट स्टेप, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स. बट वी फाइंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सो अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड. Again differentiate with respect to x on both sides. So students, under root 1 minus x square dot dy upon dx in multiplying, so under root 1 minus x square dot dy upon dx of differentiate by multiply method. Now under root 1 minus x square is first, dy upon dx is second. So using multiplying method, first as it is, differentiate of second d2y upon dx square. It's okay. Plus second as it is, differentiate of first under root 1 minus x square. So 1 upon 2 under root 1 minus x square. Students, under root 1 minus x square of differentiate one time 1 upon 2 under root 1 minus x square, and again differentiate 1 minus x square. dy dx of 1 minus x square. It's okay. Is equal to 2 is constant as it is. Differentiate of sin inverse x 1 upon under root 1 minus x square. It's okay. Students, next step, under root 1 minus x square into d2y upon dx square plus dy upon dx into 1 upon 2 under root 1 minus x square. 1 is constant, so 1 of differentiate with respect to x is 0 minus x square of differentiate 2x is equal to 2 upon under root 1 minus x square. It's okay. Students, next step,
Please write. Under root 1 minus x square. Under root 1 minus x square into d2y upon dx square. It's okay. You know 0 minus 2x, 0 minus 2x. तो माइनस 2x, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस. स्टूडेंट्स 0 माइनस 2x, माइनस 2x ही होता है, तो माइनस प्लस माइनस dy अपॉन dx इंटू 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 1 minus x square. It's clear? 2 cancel, 2 cancel. Next step, students, you know under root 1 minus x square, under root 1 minus x square multiply by this value or multiply by this value. It's okay. So next step, under root 1 minus x square multiply by this value. So under root 1 minus x square multiply by under root 1 minus x square. Root cancel, only write 1 minus x square d2y upon dx square minus this cancel x dy upon dx, x dy upon dx is equal to ये जो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा. जब ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये जो वैल्यू है वो कहाँ जाएगा, न्यूमिनेटर में जाएगा. न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली क्या रिमाइंडर होगा 2. इट्स ओके स्टूडेंट्स. यू नो x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1. लेट आपके पास में ये आपको इसकी नेक्स्ट स्टेप फाइंड करनी है. देन 2 मल्टीप्लाई x 2x प्लस 2 कैंसिल ओनली y इज इक्वल टू 2 1 जा 2. इट्स ओके. सेम कंडीशन दिस स्टेप. नेक्स्ट स्टेप 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस x dy अपॉन dx. स्टूडेंट्स इन प्रूव दैट minus 2 in left hand side but 2 is right hand side. So 2 change in left hand side, तो plus 2 change in minus 2 is equal to 0. Hence proved. It's okay. Please write. Students, question very simple. Y is equal to sin inverse x of whole square. It means, please see, d2y upon dx square. It means given जो फंक्शन है उसका 2 टाइम्स हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x. 1 टाइम जो डिफरेंशिएट होगा उसका dy upon dx आएगा. dy upon dx का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y upon dx स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट्स. फिर हम क्या करेंगे कि जो हमें प्रूव करना है उससे हम इसको मैच कर देंगे. इट्स ओके. हाँ स्टूडेंट्स 7.5 एक्सरसाइज कंप्लीट. अब हम 7.5 एक्सरसाइज है उसके एग्जांपल को हम देखते हैं. Example number 19. Example number 19. Find the second derivative of the following function. Find the second derivative of the following function. Students, आपको example number 19 में आपको 6 पार्ट्स दिए हुए हैं. 6 पार्ट्स में आपको 6 फंक्शन है, उनका हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है. Example number 19. First, given y is equal to x power 20. Example number 19.
इन फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट x पावर 20। स्टूडेंट्स हमें गिवन है y इज इक्वल टू x पावर 20, फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव, इट मींस d2y अपॉन dx स्क्वायर। सो y ऑफ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x टू टाइम्स, इट्स ओके, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x on both sides, y of differentiate dy upon dx is equal to x power 20 of differentiate using x to the power n of differentiate, to 20x power 19, it's okay. Again differentiate with respect to x on both sides, on both sides, dy upon dx of differentiate with respect to x is d2y upon dx square, 20 is constant as it is, differentiate of x to the power 19, so 19 into x of power 18, students 20 is constant as it is, x power 19 of differentiate 19 dot x power 18, so d2y upon dx square is equal to 20 multiplied by 19, 380 x power 80, hence it's okay, very simple. Part second, y is equal to x cube log x, x cube log x. Students, given function x y is equal to x cube log x, find the second derivative, okay. X cube and log x in multiply, so differentiate by multiply method, x cube is first or log x is second, differentiate with respect to x on both sides, it's okay. Y of differentiate dy upon dx is equal to first as it is, dy dx of log x 1 by x plus log x second as it is, differentiate of x cube 3x square, it's okay. dy upon dx is equal to x cube by x, x square plus 3x square log x, it's okay. Value dy upon dx, but find the value d2y upon dx square, but find the value d2y upon dx square, so again differentiate with respect to x, it's okay. Again differentiate with respect to x on both sides, इट्स ओके. तो नेक्स्ट स्टेप ऊपर कर रहे हैं. यू नो dy upon dx of again differentiate with respect to x, d2y upon dx square is equal to x square of differentiate 2x, 3 is constant, in bracket you know x square dot log x in multiply, so differentiate by multiply method, so x square is first or log x is second, so using multiply method x square as it is, dy dx of log x 1 by x plus second as it is, it means log as it is, differentiate of x square 2x, bracket close. Students, it's okay. d2y upon dx square is equal to 2x plus 3 multiply in bracket 3 x square by x only x, okay. 3 multiply तो 3 x square में अगर x का डिवाइड होगा तो x आएगा और x मल्टीप्लाई किससे 3 से होगा, इट्स ओके. प्लस प्लस 3 2 जा 6x log x,
So finally value of d2i upon dx square is equal to 2x plus 3x 5x plus 6x dot log x. Hence, okay students, are you understanding? Very simple question. Next, e to the power 6x dot cos 3x, e to the power 6x dot cos 3x. स्टूडेंट्स ये आप स्वयं करेंगे, इसको सेल्फ सोल्व करेंगे। इसको क्वेश्चन में राइट कर देता हूँ, इसको आप सेल्फ सोल्व करेंगे। y is equal to e to the power 6x dot cos 3x, e to the power 6x dot cos 3x given. You know, find the second derivative d2i upon dx square, but two function in multiplying, so differentiate of by multiplying method. So e to the power x is first, cos 3x is second. So find dy upon dx, again differentiate. It's okay. Are you understanding? तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप सेल्फ सोल्व करेंगे। इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 4 आप आसानी से कर सकते हैं, और ऐसा जो क्वेश्चन है वो पहले आपके 7.5 एक्सरसाइज में आ चुका है। log x, वेरी इंपॉर्टेंट। y is equal to log x. Students, you know, function of function, so using chain rule, it's okay. Find the second derivative, differentiate with respect to x on both sides. So y of differentiate dy upon dx is equal to, स्टूडेंट्स log, और इस log के लिए जो वैल्यू का काम कर रहा है, वेरिएबल का काम कर रहा है, कौन कर रहा है? log x कर रहा है। तो वन टाइम जो आउट में जो log है, आउट में जो वैल्यू उसका डिफरेंशिएट होगा। इट मींस log का डिफरेंशिएट, तो 1 अपॉन log के साथ में क्या वेरिएबल है? log x है, 1 अपॉन log x dy dx ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है इसका? log x है। इट्स ओके। स्टूडेंट्स, यू नो sin 3x ऑफ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिफरेंशिएट किसका करोगे? साइन का करोगे, और साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है? cos। जो साइन का थीटा है वही cos का थीटा होगा, कितना? 3x। फिर जो अगेन डिफरेंशिएट होगा वो किसका होगा? थीटा का होगा, 3x का होगा। और 3x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्या होता है? 3 होता है। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 cos 3x। इट्स ओके। सेम कंडीशन, dy dx of dy upon dx is equal to 1 upon log x into log x of differentiate with respect to x 1 by x. dy upon dx is equal to 1 upon x into 1 upon log x. It's okay, students. But we find the value of d2i upon dx square, second derivative is first derivative. Again differentiate with respect to x, find second derivative. Again differentiate with respect to x on both sides. Students, very simple. You know, dy upon dx of again differentiate with respect to x is d2i upon dx square. It's okay. In multiplying, so using differentiate by multiply method, is first is second. So 1 by x as it is, 1 by x as it is. Students, 1 by log x, 1 by log x of differentiate, one time 1 by x of differentiate minus 1 by x square, minus 1 upon x square, 1 upon x of differentiate minus 1 upon x square.
वन अपॉन log x, वन अपॉन log x। तो लेट इसको हम x लेट कर लेते हैं वन टाइम के लिए, तो डिफरेंशिएट क्या होगा इसका, -1/log x स्क्वायर। बट अगेन डिफरेंशिएट ओनली सिंगल किसका होगा, log x का होगा, तो 1/x। जैसे यहाँ पर 1/x है, 1/x का डिफरेंशिएट होता है -1/x², लेकिन अगेन डिफरेंशिएट किसका करेंगे, x का 1 होगा। तो जब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1/x²। लेकिन यहाँ पर हमें log x का अगेन डिफरेंशिएट इसको दिखाना होगा, करना होगा। देन स्टूडेंट्स 1/log x ऑफ डिफरेंशिएट इनटू -1/log x² इनटू log x of differentiate 1/x। Students again repeat, first as it is differentiate of second, तो 1/log x of differentiate -1/-1/log x of whole square into differentiate of log x 1/x plus second as it is into differentiate of first 1/x of differentiate -1/x²। It's okay, you are understanding students। next step, d2y/dx² is equal to माइनस आगे आ जाएगा -1/x log x of होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स यू नो 1/x इंटू 1/x, 1/x ये, इट्स ओके स्टूडेंट्स। 1/x मल्टीप्लाई -1/log x होल स्क्वायर इंटू 1/x, तो 1/x इंटू 1/x 1/x² इंटू log x ऑफ होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स प्लस माइनस 1/x² को हमने फर्स्ट में राइट कर लिया इंटू 1/log x, इट्स ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप, इसमें से कॉमन क्या है, इसमें से हम कॉमन क्या ले लें, इसमें से क्या कॉमन है, इसमें से वन टाइम तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें वन टाइम माइनस कॉमन ले लेते हैं और log x कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन है -1/x² log x, इट्स ओके स्टूडेंट्स। इसमें से कॉमन क्या लिया हमने, माइनस ले लिया, x² भी है तो x² लिया और log x ले लिया, इसमें कॉमन क्या हो गया, -1/x² log x, इसमें से कॉमन आ गया। इन ब्रैकेट देखिए क्या रिमाइंडर है ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर क्या रिमाइंडर रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, x² कैंसिल हो गया, 1/log x इसका होल स्क्वायर में से हमने ओनली 1/log x कॉमन लिया, तो क्या राइट रहेगा, 1/log x प्लस 1, इट्स ओके। आर यू अंडरस्टैंडिंग, वेरी सिंपल बेटा। इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस कॉमन लिया, 1/x² log x कॉमन लिया, तो इन ब्रैकेट में क्या रहेगा, 1/log x, क्योंकि 2 पावर में से 1 पावर डिडक्ट होगी, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हमने कंप्लीट कॉमन ले लिया, तो जब कंप्लीट कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, इट्स ओके, प्लीज राइट। नेक्स्ट 5, पार्ट नंबर 5, sin log x y is equal to sin log x, but find value d2y/dx²। So this function of differentiate 2 times with respect to x, differentiate with respect to x on both sides। So y of differentiate dy/dx is equal to, ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट साइन ऑफ डिफरेंशिएट cos थीटा एज इट इज, dy/dx ऑफ थीटा इट मींस log x, इट्स ओके स्टूडेंट्स। फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो डिफरेंशिएट बाय चेन रूल, तो sin x ऑफ डिफरेंशिएट cos
साइन थीटा log x, तो cos थीटा भी क्या होगा log x होगा, और log x का अगेन डिफरेंशिएट हो जाएगा, dy upon dx इज इक्वल टू, इट्स ओके, log x of differentiate 1 by x is first derivative, but find the value d2y upon dx square, second derivative. So again differentiate with respect to x. X on both sides. It's okay. Then dy upon dx of again differentiate with respect to x is d2y upon dx square is equal to, students, cos log x is first and 1 by x is second. Differentiate by multiply method. Differentiate by multiply method. It's okay. So first as it is, differentiate of 1 by x is minus 1 by x square, minus 1 by x square, plus second as it is, differentiate of first value cos log x, तो cos of differentiate minus sin log x as it is, it's okay, into log x of differentiate 1 by x. Students, very simple, first as it is 1 by x of differentiate minus 1 by x square, plus second as it is differentiate of first, so cos of differentiate minus sin theta as it is differentiate of theta log x of differentiate 1 by x, d2y upon dx square is equal to, इसको सेपरेट राइट कर लेते हैं, माइनस 1 by x स्क्वायर cos log x, स्टूडेंट्स यू नो, प्लस माइनस माइनस 1 by x into 1 by x, 1 by x square sin log x. It's okay. Are you understanding? Student, next step in this common, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है माइनस 1 by x स्क्वायर, हमने इसमें कॉमन ले लिया, क्योंकि जो टू पार्ट हैं उनमें कॉमन क्या है, माइनस 1 by x स्क्वायर कॉमन है, तो ब्रैकेट में रिमेनिंग क्या रहेगा, cos log x प्लस का cos log x प्लस sin log x. इट्स ओके, यही हमें फाइंड करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो फाइंड d2y upon dx स्क्वायर, तो वी फाइंड d2y upon dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 by x स्क्वायर cos log x प्लस sin log x. इट्स ओके स्टूडेंट्स. पार्ट 6 given y is equal to tan inverse x. Okay, differentiate with respect to x on both sides. You know y of differentiate dy upon dx, tan inverse x of differentiate 1 upon 1 plus x square. It's okay. 1 plus x square multiplied by dy upon dx, cross multiple. Okay, by cross multiple. It's okay. So again differentiate with respect to x. On both sides. You know 1 plus x square is first, dy upon dx is second. It means 1 plus x square as it is, तो differentiate of second dy upon dx of differentiate d2y upon dx square, plus second as it is differentiate of first
2x और 1 is constant of differentiate 0. It's okay. Are you understanding problem? Students, you know next 1 plus x square d2y upon dx square plus 2x dy upon dx is equal to 0. Okay, you know d2y upon dx square मल्टीप्लाई में क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इस वैल्यू को हम चेंज कर दिए तो माइनस का क्या हो गया 2x dy upon dx. ठीक है, प्लस का 2x dy upon dx है, राइट साइड में जाएगा तो फिर माइनस का हो गया. यहाँ से फाइंड क्या करना है d2y upon dx स्क्वायर फाइंड करना है. d2y upon dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x upon 1 प्लस x स्क्वायर डॉट dy upon dx डॉट dy upon dx. It's okay. Then next step, d2y upon dx square is equal to minus 2x upon 1 plus x square. You know value of dy upon dx. Make equation first, make equation second. Students, value of dy upon dx from equation second 1 upon 1 plus x square. Okay, from equation second. So finally value d2y upon dx square is equal to minus 2x upon, you know 1 plus x square 1 plus x square, so 1 plus x square of whole square. It's okay, hence. Okay friends, it is clear. Next question करते हैं, next period. It's okay.